The following standards have been set to manufacture a product. Now see what they are giving. They are giving us the standard. अब standard किसके regarding दिया है? They have given us for the direct material as well as they have given us for the direct labor. 4 units of X at the rate of rupees 4 per unit, which is equal to 4 into 4 करोगे तो कितना मिलेगा? 16. And they have given us the 6 unit of Y at the rate 3 per unit. मतलब see, you have a 2 types of direct material. One is X and another one is a Y. तो हमारे पास मटेरियल के दो टाइप है, X मटेरियल एंड Y मटेरियल, और उनकी हमें यूनिट्स दी गई है. ठीक है, 6 into 3 which comes to 18. So standard material cost total कितना है? 34. They have given us the direct labor. So 3 hours at the rate rupees 2 per unit. 3 hours पर एक 1 hour का कितना हो रहा है? 2 per unit. तो टोटल कितना हो जाएगा? 6. So they have given us a standard cost per unit will be total after adding material and labor together, it will be 40 now. The company manufacture and sold 6,000 units. अब देखो ये standard cost per unit दी है, यहाँ पर कितनी units manufactured and sold हुई है? 6,000 units. So this data is not for whole of the units. This is the data which has been given for their respective units only. The details of the direct material and the direct cost being direct material. अब देखो एक्चुअली में कितना हुआ है? This has been given to us. ठीक है, सो 25 यूनिट्स एक्चुअल में. अब तुम लोग सी, अगर आपको कंफ्यूजन हो ना तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो कि यहाँ पर 4 यूनिट्स है, यहाँ पर 25 यूनिट्स है. क्या ये कंपेरेबल है? Obviously no, you cannot compare 4 units and 25 units. You cannot compare the 6 units and 36,000 units. समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमारा ये तो हमें डेटा पर यूनिट है और टोटल हमारा कितना मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड हुआ है? 6,000 यूनिट्स. सो ऑब्वियसली यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस 4 यूनिट्स विद 6,000 यूनिट्स, 6 यूनिट्स विद 6,000 यूनिट्स. ओके, सो एंड दे हैव गिवन अस द रेट. तो देखो हाँ, दोनों में हमारे पास स्टैंडर्ड रेट है. यहाँ पर भी 4 and 3 इज अ स्टैंडर्ड रेट. Here also we have 4.20 and 2.70 as a standard actual rate. So we have a standard and actual rate which is given properly. सिर्फ हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. Now direct labor hours are 17,000 hours at the rate 2.2 per hour. So obviously you need to find out. देखो 3 hour है यहाँ पर. Is 3 hour and 17,000 hours comparable? No. Why? Because it is just given. ये unit में दिया है and यहाँ पर see it is there in the hours. So you need to first standard. Yes, you need to find out कि standard output for the actual output कितना है. So calculate the following variances: material cost variance, material usage variance, and material price variance. So they are asking us to find out all the 3 material variances and labor cost variance, labor efficiency variance, and labor rate variance. और दूसरे तीनों labor variances भी पूछ रहे. So in this sum they are asking us to find out all the 6 type of variances, including both material and the labor variance. So what we will do, हम पहले ना एक प्रॉपर टेबल बनाएंगे और उसमें यूनिट्स लिखते जाएंगे, सो दैट हम डायरेक्टली फ्रॉम हियर वी कैन स्टार्ट अप्लाइंग दिस इनटू द फॉर्मूला. ठीक है, अब मेरे पास दो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है. आई हैव मटेरियल एक्स एंड आई हैव मटेरियल वाई. सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी राइटिंग डाउन लाइक दिस एक्स एंड वाई. ओके, नाउ स्टैंडर्ड क्वांटिटी. तो मुझे एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, सो अकॉर्डिंगली आई विल बी फाइंडिंग आउट. I have an actual output which has been given, so I will be writing down over here actual output is how much? 6,000 units. और x कितना होगा? 4 units बना रहे हैं हम लोग, तो 4 units into actual output is 6,000, so which will be equals to 24,000 units. Same way we need to find it out for the y. We have a 6 units, so 6 into actual output is 6,000 units, which will be equal to 36,000 units.
Fine. So with this, we got a standard quantity for X and Y, 24,000 units and 36,000. If I take a total, तो कितना हो जाएगा total? इस दोनों का total will be 60,000 units. Now we have a standard price is given. कितना है? 4 for X material and for Y we have a 3. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे मिलेगा हमें? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस विल गिव अस द स्टैंडर्ड कॉस्ट. So which will be equals to 24,000 into 4. Same way, 36,000 into 3. क्वांटिटी तो दिया ही है हमें 25,000 units and 36,000 units. Actual price has also been given 4.2 and 2.7. So actual cost कितना हो जाएगा? 25,000 into 4.2, 1,05,000. And here it will be 36,000 into 2.7, which will be equal to 97,200. Just take a total of the cost, 2,04,000. The quantity is 61,000. And actual cost is 2,02,200. अब क्लास मुझे ये बताओ, is this units equal? स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी तो इक्वल होना चाहिए ना, करेक्ट ना? यहाँ पर भी अगर 60 तो यहाँ पर भी 61 आना चाहिए. When it is not the same, what we need to find out? Obviously we need to find out the revised standard quantity. क्यों? क्योंकि दोनों का जो भी आउटपुट यूनिट्स है that is not the same. So for इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा रिवाइज्ड क्वांटिटी. So let's find out the revised quantity. 24,000, that is standard quantity. If I divide it by $61,000, which will be equals to how much? कितना हो जाएगा? Find out and tell me in the chat box. Very good. 24,400. Just writing down over here. Or else I can increase down this space now. Equal to 24,400. Same way, we need to find it out. Yeah, just check it up. So this will be how much? 61,000. Same way, actual output
देखो स्टैंडर्ड आज कितना दिया है, थ्री इंटू 6,000. When I do 3 into 6,000, I will be getting 18,000 hours. कैसे आया? 3 hours into 6,000. Standard rate is 2. So the cost कितना हो जाएगा? 18,000 into 2, 36,000. Actual hours are 17,000. Actual rate is 2.2. So actual cost will be 37,400. Now we have to just apply this into the formula. इतने तक that's clear. Anyone facing any of the doubt till here? हमने क्या किया, सिर्फ जो इंफॉर्मेशन दिया था हमने उसको एक प्रॉपर टेबल फॉर्म में ले लिया, सो दैट while applying the formula we will be directly taking the data from here. Now the very first one is what they are asking us to calculate. They are asking us to calculate the variances. So first one is material cost variance. What is the formula? Standard cost minus actual. Standard cost minus actual cost. तो अभी देखो देयर इज नो नीड टू अगेन मल्टीप्लाई एंड फाइंड इट आउट, बिकॉज हमने देखो मल्टीप्लाई करके सीधा फाइंड आउट करके रख दिया है. तो रादर देन गोइंग अगेन फॉर द सेम, आई विल सजेस्ट यू कि आपने अगर फाइंड आउट कर लिया है तो वापस मत करो, डायरेक्टली यू राइट इट डाउन. स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है हमारा? 96,000. सो 96,000 माइनस actual is 1,05,000, which will be equals to 9,000 adverse. Same way, calculate it for the y. Standard cost for the y is 1,08,000 minus actual is 97,200, which is equals to 10,800 but favorable. Same way, we can find out the material usage variance, because second one is material usage variance. Standard rate, and that you have to multiply it by the difference of standard quantity minus actual quantity. Difference of standard and the actual quantity. So again, it will be for x and y. $24,000 minus actual quantity is how much? 25,000. This equals to 4 into 1,000. That is 4,000. But adverse. Same way for the y. Standard rate is 3. 36,000 standard quantity है and actual quantity भी 36,000 है. So here we will get nil, because 36 minus 36 becomes 0, and anything if you multiply it by 0 will be 0 only. So either you can write down 0 or you just write down nil. That's it. दोनों में से कुछ भी एक लिख सकते हो. Either write down 0 or write it down nil. Next is material price variance.
स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, एंड दैट डिफरेंस को जो भी मिलेगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से. नाउ स्टैंडर्ड रेट इज standard rate, that is standard price is 4 minus 4.2. 25,000 4 minus 4.2 is equals to 25,000 into 0.2, 5,000 adverse. Why? Actual quantity is 36,000. 3 is a standard this rate, and 2.7 is actual one. So 3,000 into 0.3, 10,800, but favorable. We are done with a material variances. Now we need to find out the labor variance. So first one is labor cost variance. So again standard cost minus actual cost. ठीक है, यहाँ पर हमने again we have find it out and we have kept. ठीक है, और यहाँ पर there is no x or there is no y material, direct labor as has been given, there is no comparison which is given, तो आपको सिर्फ एक ही find out करना पड़ेगा. So labor cost standard as डायरेक्टली हम कर देंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. ठीक है, बिकॉज व्हाट इज दिस इज अल्टीमेटली नथिंग बट स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट इक्वल्स टू 36,000 minus 7,400. $1,400 adverse. Now next is labor efficiency variance. Standard hour minus actual hour into standard quantity. Now standard hours minus actual hours. So 18,000 minus 17,000. $18,000 first. Actual hours are 17,000. And standard rate is 2. This will be equals to 1,000 into 2. So 2,000 favorable. Last one is labor rate variance. What is the formula? Actual hour into difference of standard rate and actual rate. So actual hours are कितना है? 17,000 and difference between a standard rate and the actual rate. So 2 minus 2.2.
2 minus 2.2, 17,000 is equals to 0.2 into 17,000. 34,000 adverse. We are done with this. अगर वेरिफिकेशन करना है तो yes, you can do the verification. We all know that material cost variance is a total of material usage and material price variance. So you can do it. अब देखो material usage variance क्या है 4,000 adverse. Material price variance क्या आएगा 5,000 adverse plus 10,800. This is 5,800 favorable. Here it will be 5,800 favorable. Here it will be 4,000 adverse. तो दोनों का डिफरेंस देखो कितना आएगा 1800 फेवरेबल. तो ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 1800 फेवरेबल. Is it coming over here 1800? Yes, it is coming.